Very good morning, students. I hope you all are great and doing good in your studies. Today, we are going to do our chapter 8, which is Introduction to Programming. So, let's start it. The name of the chapter is Introduction to Programming, and the topics which we will discuss in this lesson are understand the concept of computer languages, discover different ways to work with Python, distinguish between low level and high level languages, define and create variables in Python, identify language translators and their role, understand the use of different data types, become familiar with Python and its features, write explanatory comments within your Python code, learn how to install Python software, utilize full range of Python operators, and utilize the input function. Now, this is our activity which says look at the following lines of code. Even if you don't know Python, can you guess what it's trying to do? Share your thoughts. यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने name दिया है विच इज फरहान और फिर हम प्रिंट करा रहे हैं हेलो एंड देन नेम। दैट मीन्स ये क्या करेंगे, ये हमें एज अ आउटपुट प्रिंट करके देगा हेलो एंड फरहान। so this is what we will get when we print it hello फरहान। तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके का कुछ प्रिंट हो। नाउ अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस, वी नो कंप्यूटर्स कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं टू कंप्लीट एनी टास्क एंड जो नेम होता है फॉर दिस सेट ऑफ स्टेप इज एन एल्गोरिथम। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द स्पेशल लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें हम कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज एक सिस्टम है ऑफ वर्ड्स, symbols and codes that a computer can understand. Instructions जो होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं फ्रॉम अ कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्रामर्स वो पीपल होते हैं जो इन प्रोग्राम्स को लिखते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज दो तरीके की होती है, लो लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल में वी हैव मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल में वी हैव थर्ड जन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। नाउ लो लेवल लैंग्वेजेस मशीन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक प्रोग्राम which is written in one only will work on a specific type of computer. There are two main categories of low level languages. एक होता है first generation of programming language. Very first programming language is introduced, was used in computers was machine language, and this is the only language जो computer directly understand करता है. In machine language, instructions are given using binary code, यानी कि series of ones जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑन स्टेट एंड जीरोस जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारा ऑफ स्टेट। प्राइमरी फंक्शन जो होता है मशीन लैंग्वेज का इज टू इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, जो हैंडल करता है ऑल द इंस्ट्रक्शंस व्हिच फॉर्म द आर्किटेक्चर ऑफ हार्डवेयर सिस्टम्स। Now machine language was first developed to interact with first generation computers. इसके फीचर्स होते हैं दैट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट विद इन वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज अ कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मशीन लैंग्वेज यूज करता है बाइनरी कोड सच एज 0 and 1, फॉर एग्जांपल दिस। मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू रीड एंड राइट। नाउ सेकंड जनरेशन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसको हम असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेजेस आर निमोनिक कोड्स, ये निमोनिक कोड्स का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड्स। निमोनिक एक अल्फाबेटिकल एब्रिविएशन है जिसको यूज किया जाता है एज अ मेमोरी एड। इसका मतलब प्रोग्रामर कैन यूज एब्रिविएशंस दैट इज इजी टू रिमेंबर बिकॉज द कोड रिजेंबल द ओरिजिनल वर्ड्स। फॉर एग्जांपल कुछ निमोनिक्स होते हैं दैट आर यूज्ड एज फॉलोज। एडिशन के लिए ए डबल डी, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, डिवाइड DIV, मल्टीप्लिकेशन MULT। Now assembly language applications must be transformed to machine language ताकि कंप्यूटर उनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पाए। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज आर ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट एंड प्रोग्रामिंग इन इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। इसके फीचर्स होते हैं दैट ये एक लो लेवल लैंग्वेज है जो यूज करती है निमोनिक्स टू रिप्रेजेंट ईच ऑपरेशन। असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेजेस बहुत सिमिलर होती हैं, बट assembly languages is more readable version of machine language. Assembler program is necessary to translate assembly language into machine language. Program जो written होता है by programmer in a high level language या फिर in assembly language which is to be converted into a machine language by the compiler known as source code. Source program को convert किया जाता है into machine level instruction for execution, and this converted program is known as an object code. Let's say source code, then assembler, then object code. Now autocoder, SAP and SPS are some examples of second generation languages. Then we have high level language जो एक programming language है and it lets you write programs that can run on any kind of computer.
पीपल कंसीडर करते हैं इन लैंग्वेजेस को टू बी हाई लेवल बिकॉज दे आर मोर लाइक ह्यूमन लैंग्वेजेस एंड लेस मशीन लाइक। हाई लेवल लैंग्वेजेस बेटर होती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस से बिकॉज वो इजियर होती हैं टू रीड, राइट एंड कीप अप विद। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड लैंग्वेजेस। फर्स्ट इज थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को कंसीडर किया जाता है एज हाई लेवल बिकॉज दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस एंड सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। फॉर्ट्रन, अल्कोल, कोबोल, ये सब हमारी जो है ये थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल्स है। फोर्थ जनरेशन, ये जो लैंग्वेज है ये क्लोजर होती है टू ह्यूमन लैंग्वेज देन दी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। दे आर मेनली यूज्ड फॉर डेटाबेस एक्सेस, report generators, data manipulation, analysis, etc. Some examples हैं fourth generation languages के, which is Perl, Ruby, Python, etc. Fifth generation programming languages जो हैं they are next step in evolution of programming languages. Fifth generation languages को हम natural language भी बोलते हैं. It has systematic order of functions and commands to complete a task या फिर a program. Natural languages are very easy to use and often associated with expert systems and AI. कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, विच इज मर्करी, LISP, OPS5, Prolog, etc. फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो बेस्ड है ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड दे आर यूज्ड इन AI. लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एक ट्रांसलेटर जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर है जो यूज किया जाता है टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. इट टेक्स सोर्स लैंग्वेज प्रोग्राम एज इनपुट और उसको कन्वर्ट करके देता है as output. Translator is capable होता है for detecting and reporting any error during the translation process, and there are three types of language translators: assembler, interpreter, compiler. Assembler क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है assembly language instruction into machine code, that is zeros and ones. Interpreter ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्राम कोड्स को into machine language and ये ट्रांसलेट करता है हाई लेवल प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. Now compiler ये भी कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज एंड ये कन्वर्ट करता है हमारे कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को इनटू मशीन कोड इन वन गो. कंपाइलर इज फास्टर देन एन इंटरप्रेटर. पाइथन ये एक पॉपुलर लैंग्वेज है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज अ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज की जाती है फॉर वाइड रेंज फॉर टास्क. पाइथन इज यूज्ड लॉट टू क्रिएट games, websites, graphical user interface programs, web applications. Python was created by Guido van Rossum in 1991. Python के features हैं that ये एक excellent है for beginners as a language is interpreted, hence giving immediate results. Python has few keywords, simple structure and clearly defined syntax जो allow करता है students को to pick up the language quickly. It is very simple high-level language with a vast library of add-on modules. Programs written in Python are easily readable and understandable. Python has an object-oriented approach. This means that the programs are designed using objects and classes to interact करते हैं with each other. We can easily integrate Python with other languages जैसे C, C++, and we can also write and compile Python code in C or C++. Code you create in Python is executed line by line, which makes it easier to correct any errors. On execution, Python code is immediately converted into an intermediate form. This is known as bytecode. Bytecode makes it easier to execute या फिर run the code in future. ये एक platform independent programming language है, which means it can be used on any machine and in any operating system. It is free to use and even free for commercial products. Python को use किया जाता है by major companies जैसे Google, Netflix and Spotify. Installing Python, Python install करने के लिए we have Python software जिसको हम download कर सकते हैं free from the Python website. Now after downloading Python interpreter, simply run it by double clicking on the downloaded file. एक Python setup dialog box appear होगा. Then click on install now button. Python will be installed into your directory. Modes of Python. Python work करता है दो ways से, interactive mode and script mode. And first we will study about interactive mode. ये जो mode है इसमें Python carry करता है give instructions को and show करता है results by itself. Script mode, यहाँ पे Python instructions को store किया जाता है in a file with .py extension and are executed together in one go as a unit. The saved instructions are known as Python scripts या फिर Python programs. Now working in interactive mode, यहाँ पे हमें click करना है start button पे, scroll down to the list of programs and click on Python 3.12 folder. Click on Ideal Python 3.12.
Now, IDLE stands for Integrated Development and Learning Environment. IDLE screen appear hogi like this, and if it is the code editor which helps you to write and execute Python programs in the editor itself. Now, when you type command after prompt के बाद जब आप कोई command डालते हो and press करते हो enter की, तो जो interpreter है वो convert करता है command into machine language. After processing, interpreter again convert करेगा machine code को into output which is human readable form. Components होते हैं हमारे Python window के. First is title bar जो display करता है name of the current document. Also contain करता है हमारी कुछ commands जैसे minimize, maximize, restore and close. मेन्यू बार कंसिस्ट करता है कुछ सेवरल मेन्यूज विद डिफरेंट ऑप्शंस, जैसे फाइल मेन्यू जो कंटेन करता है ऑप्शंस लाइक न्यू, सेव, ओपन, प्रिंट. एडिट मेन्यू जो कंटेन करता है ऑप्शंस लाइक अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड. शेल जो कंटेन करता है व्यू, लास्ट, रीस्टार्ट, शेल, हिस्ट्री एटसेट्रा. डीबग which contains go to file या line या debugger etc. ऑप्शन मेन्यू जो कंटेन करता है viewing and changing various default settings. विंडो मेन्यू जो कंटेन करता है कमांड्स फॉर विंडो मैनेजमेंट. हेल्प मेन्यू which is used to obtain help on any particular topic. We have script area जो एरिया जहां पे प्रोग्रामर हमारा प्रोग्राम लिखता है या एडिट करता है. prompt in the script area blinking cursor appears after this symbol which is called the prompt. Status bar along with the bottom of the screen gives you information about control cursor on the window. In interactive mode हम टाइप करते हैं Python expressions, statements, commands after the prompt and Python immediately respond करता है with its output. तो हम टाइप करेंगे 28 plus 9 and press करेंगे enter key. The output 37 will appear. Try more values and see the output on the screen. Working in script mode. Interactive mode में हम सेव नहीं करते codes जो हमने enter करे हैं by the user in the form of a program. On the other hand, script mode के अंदर हम सेव करते हैं अपने entered code को which is entered by the user. So we should permanently save our code in script mode to modify and reuse the code. To understand working in script mode, हम divide करते हैं process को into the following 4 parts. First is creating a new file. So open idle Python, click on file menu, then click on new file option. Then write a program. आप एक new window appear होगी, वहां पे आप अपना code लिखोगे that you want to save as a program. Then एक new window appear होगी. Now save करना है आपको अपने Python program को. Save your program by clicking on file menu, save option, save as dialog box appear होगा. एक location देनी है folder जहां पे आपको save करना है. Write the file name and click on save button. After that run करना है Python program. So for that click on run menu and run module option. It will execute the commands and display the output of your program in Python shell window. Also we have a shortcut key F5 जिससे हम अपने Python script को run करा सकते हैं in idle. By default all Python program files name that ends with .py extension. हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है to create new file which is Ctrl+N and the result generated by the interpreter in both the modes that is interactive and script mode is exactly the same. तो रिजल्ट में हमारे पास दोनों ही मोड में कोई भी डिफरेंस नहीं आता. नेक्स्ट इज यूजिंग प्रिंट फंक्शन. तो जो प्रिंट फंक्शन है हम उसको यूज करते हैं टू शो द आउटपुट ऑफ एनी कमांड ऑन द स्क्रीन. फॉर एग्जाम्पल prompt print hello world will display hello world like this. Remember Python एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. This means इसकी जो डिफरेंशिएट करता है between capital and small letters. For example, capital P अगर हम यूज करते हैं and small p, they are not same in Python, where print is just a word and print is a correct command in Python. Variables, these are one of the fundamental building blocks of programs written in Python. Variable एक name होता है जिसको हम यूज करते हैं to refer as a memory location for later use. Python variable is also known as identifier and used to hold a value. Only one data can be stored in a variable at a time. If a new value is stored in a variable, previous value will be erased. Rules to write variable name. Variable name के लिए हमारे पास कुछ rules होते हैं in Python. तो first character in the variable must be a alphabet या फिर underscore. Number नहीं हो सकता. All the characters except first character may be an alphabet या फिर lower case which is A to Z, uppercase, underscore या फिर digit 0 to 9. Variable name must not contain any white space या फिर special characters.
Variable name must not be similar to any keyword defined in the language. Variable name are case sensitive. For example, my name and my name is not the same. Example of valid identifiers: name, class, age, this etc. इनवैलिड हो गए जैसे ये हमारे पास ये नहीं चालू होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होता, स्पेस प्रोवाइडेड नहीं होता, सो दीज आर इनवैलिड. नाउ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं? इन पाइथन वेरिएबल को डिक्लेयर और असाइन किया जाता है एक वैल्यू यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर. नाउ द ऑपरेंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेटर name is the variable and operand on the right side of this operator is the value to be stored. For example, a is equals to 5. तो a यहाँ पे 5 है, a यहाँ पे हमारा वेरिएबल है जिसको हमने वैल्यू दे दी 5. ऐसे b हमारा वेरिएबल है जिसको हमने वैल्यू दे दी 10. c हमारा वेरिएबल है जिसमें हमने x प्लस y को एक y की वैल्यू दे दी. एंड ऐसे ही a एक हमारा वेरिएबल है जिसमें हमने c प्लस 1 की एक वैल्यू दी. Now you can also assign multiple values to multiple variables in the same line in the following way. Like name, age, grade equals to this. आप same line पे भी इनको assign कर सकते हो. Print name is this, print age is this, print grade is this. So this is what it will be displayed. Data types क्या होते हैं? Data stored in a memory can be of many types. For example, किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी पर्सन की जो एज है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में शो होगी, एड्रेस अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स में होगा. तो पाइथन के पास बहुत सारे स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं टू डिफाइन दी ऑपरेशंस पॉसिबल ऑन देम एंड स्टोर्ड मेथड फॉर ईच ऑफ देम. डेटा टाइप एक कैटेगरी होती है ऑफ वैल्यूज एंड every value belongs to exactly one data type. The most common data type in Python are listed below. First is int, यानी कि integer. यहाँ पे whole number, positive या फिर negative, without decimal and unlimited length. For example, the values these are said to be integer values. And integer यानी कि और int data type indicate करता है values that are whole numbers. So integer int range करता है integer in Python from this to this. Long integer अनलिमिटेड रेंज सब्जेक्ट होता है टू अवेलेबल मेमोरी. बूलियन इंटीजर ये जो टाइप होता है ये यूनिक डेटा टाइप होता है जो कंसिस्ट करता है ट्रू या फिर फॉल्स एज अ रिजल्ट. फ्लोट ये हमारे फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम फ्लोट या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं. यहाँ पे हमारे पास कंसिस्ट करते हैं ये लोग, ये वाले साइन सीक्वेंस ऑफ डेसिमल डिजिट्स एंड डॉट सच एज दिस. पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पे. So note that even though the value is 15 in an integer, the value 15.0 would be a floating point number. String Python programs के अंदर text values भी आती हैं जिन्हें हम string बोलते हैं and they are in quotation brackets. Now instead they only tell computer where the string constraint begins and ends. So string को हम define कर सकते हैं as a data type used in programming to represent text rather than numbers. Example hello, this ये सब हमारे strings हैं. Now comments in Python. With Python हम यूज करते हैं comments to explain different parts of code and the code can also be hidden with it. तो comments basically हमारी वो sentences, वो lines होती हैं जो हमारे execution पे नहीं आती, they are just to explain the code. Single line comment होता है. In case user wants to specify single line comment, then the comment must start with a hash symbol like this. मल्टीपल लाइन कमेंट, तो पाइथन डज नॉट हैव एनी सिंटेक्स फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐड करने के लिए आप यही सिंबल इंसर्ट कर दोगे फॉर ईच लाइन लाइक दिस. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ डू यू राइट कमेंट इन पाइथन? सो वी राइट कमेंट विद द बिगिनिंग ऑफ हैश. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर्स. पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज स्पेशल सिंबल्स which perform arithmetic and logical computations. तो ऑपरेटर्स होते हैं जो पाइथन के अंदर हमारे अरिथमेटिक या फिर जो लॉजिकल हमारे ऑपरेशंस होते हैं या उनकी कंप्यूटिंग होती है उनको ये हैंडल करते हैं. द वैल्यू विच द ऑपरेटर्स यूज टू गेट द आउटपुट इज कॉल्ड ऑपरेंड्स. नाउ फॉर एग्जांपल इन द एक्सप्रेशन 10 - 5, 10 और 5 हमारे क्या है, ऑपरेंड्स है. एंड जो हमारा माइनस साइन है इट इज द ऑपरेटर. नाउ पाइथन डिवाइड करता है हमारे ऑपरेटर्स को इन फॉलोइंग कैटेगरीज. तो सबसे पहले हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर. अरिथमेटिक ऑपरेटर आर कॉमनली यूज्ड टू परफॉर्म न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. नाउ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं एज यूनिनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स. नाउ यूनिनरी ऑपरेटर्स होते हैं जहां पे सिर्फ एक ऑपरेंड होता है. एंड फॉर एग्जांपल -5, in this case minus the operator is acting as a unary operator, whereas 50 - 40 यहाँ पे the operator is acting as a binary operator. Now similarly we can use
यूनरी प्लस ऑपरेटर, फॉर एग्जाम्पल +4, ये एक एक्सप्रेशन है 4 and +4 are same. Now applying the unary operator plus in an expression generally has no significance. So in Python, spaces after number या फिर symbol do not carry any meaning. For example, this and this both results in 125. Now हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स आते हैं जैसे प्लस, ये हमारा एडिशन ऑपरेटर होता है जो हमारे दोनों ऑपरेंड्स को प्लस करता है. सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्ट करता है. दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, this is float division operator, then this is integer division operator, this is exponential operator, and this is remainder operator. Now let us consider an example program for carrying out the arithmetic operations explained in the above table. So to perform all the arithmetic operations, हमने यहाँ पे क्या किया है इस एग्जाम्पल में, a को लिया है 24, b को लिया है 8, एंड हमने सारे ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कराए हैं, विच इज एडिशन, a प्लस b, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमने फ्लोर डिवीजन कराया है, देन मॉड्यूलस एंड देन पावर. तो हमने सारे के सारे यहाँ पे अपने कैलकुलेशंस करे एंड देन सबको हमने प्रिंट करा दिया. तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा ऐसे आएगा. असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है टू असाइन द वैल्यू ऑफ द राइट एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑपरेंड. यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स डिस्क्राइब करते हैं कुछ इन फॉलोइंग टेबल्स में, जैसे दिस इज आवर असाइनमेंट ऑपरेटर. ये क्या करता है, ये हमारे जो ऑपरेंड की वैल्यू है उसको असाइन करता है. दैट मीन्स राइट साइड वाली वैल्यू टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेंड. जैसे a इज इक्वल्स टू 10, तो हमने जो ये 10 वाली वैल्यू है ये हमने असाइन कर दी वेरिएबल a को. नाउ ये हमारा होता है एडिशन असाइनमेंट. ये ऐड करता है राइट ऑपरेंड को टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन करता है रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड. जैसे a प्लस 5 इज इक्विवेलेंट टू a इज इक्वल्स टू a प्लस 5. दिस इज अ सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट. ये सब्ट्रैक्ट करता है राइट ऑपरेंड को टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन करता है रिजल्ट अगेन टू द लेफ्ट ऑपरेंड, जैसे हमने ऊपर देखा. तो लाइक दिस a माइनस प्लस 5 इज इक्विवेलेंट टू a इज माइनस इक्वल्स टू a माइनस 5. दिस इज आवर मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट. ये क्या करता है, ये हमारे राइट ऑपरेंड का जो राइट ऑपरेंड को मल्टीप्लाई कराता है लेफ्ट ऑपरेंड से एंड रिजल्ट हमारे लेफ्ट ऑपरेंड को असाइन करता है. डिवीजन असाइनमेंट सिमिलरली ये भी वर्क करता है. हमारी जो वैल्यू आती है डिवाइड करने के बाद में राइट ऑपरेंड को टू द लेफ्ट, उस आंसर को ये हमारे लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड को असाइन कराता है. रिमाइंडर असाइनमेंट, इट टेक्स मॉड्यूलस ऑफ टू ऑपरेंड्स एंड असाइन करता है रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड. Then floor division assignment, ये perform करता है floor division on operators and assign the value to the left operand again. Then we have exponential assignment, और ये perform करता है exponential यानी कि power calculations on operators and again assign करता है values to the left operand. यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिया है for assignment operators जहाँ पे a is 16 and b is 4. Then हमने यहाँ पे अलग अलग calculations perform कराए हैं and उनको print करा दिया. So this is what the output looks like. लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं हम टू इवैल्यूएट एंड कंबाइन. पाइथन सपोर्ट करता है फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर्स. पहला होता है एंड, इसका नेम है एंड. ये रिटर्न करता है ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू. जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया a इज लेस देन 5 एंड a इज लेस देन 10. तो यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि अगर जो हमारा a है वो 5 से भी छोटा है और a 10 से भी छोटा है तब कंडीशन ट्रू होगी. दैट मीन्स हमारी जो दोनों कंडीशंस है वो ट्रू होनी जरूरी है व्हेन वी आर यूजिंग एंड ऑपरेटर्स. और क्या बोलता है, और ये बोलता है कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा. जैसे a इज लेस देन 5 और a इज लेस देन 2. तो यहाँ पे a इज लेस देन 2 तो नहीं है, 5 है, बट ट्रू आएगा बिकॉज यहाँ पे और लग रहा है. दैट मीन्स दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर विल बी ट्रू. नॉट, ये रिवर्स कर देता है रिजल्ट को एंड रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू और वाइस वर्सा. यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म कराया है. a ट्रू b फॉल्स, प्रिंट a एंड b, प्रिंट a और b, नॉट a नॉट y. so this is what the answer looks like. कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारी दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, एवेल्युएट करते हैं टू अ सिंगल बूलियन वैल्यू एंड द फॉलोइंग टेबल लिस्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स. सबसे पहला आता है इक्वल टू. नाउ a 10 है b 5 है, a इक्वल टू b false because a is not equals to b. Then we have not equals to. So a is not equals to b, true because 10 is not equals to 5. Then we have less than. So a is less than b, false because 10 is bigger than 5. Now greater than, a is greater than b, true. Then we have less than equal to, that a is less than b, no. Equal to b, no. So the answer will be false. Then we have greater than or equal to. So a is greater than b, yes, it is true.
Now let us understand these operations with the help of a program to show all the comparison operator function. तो हमने यहाँ पे B A लिया है 12, B लिया है 6, नाउ C लिया है हमने 12, A equals to B, false. हमने सारे यहाँ पे परफॉर्म कराए हैं एंड हैंड टू हैंड हमें आंसर मिल गए. नाउ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स. प्रेसिडेंस एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर जिसके अकॉर्डिंगली हम इवैल्यूएट करते हैं. नाउ सर्टेन ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस देन अदर्स. For example, multiplication operator has higher precedence than addition operator. तो precedence एक प्रायोरिटी होती है कि हम किस ऑपरेटर को पहले यूज करेंगे. तो जो जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हायर होगी उसको पहले यूज किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल x is equals to 7 plus 3 into 2. Here x is assigned 13, not 20, because operator this has higher precedence than plus 1. So it is the first, यानी कि multiply 3 into 2 and then add into 7. In the following table, operators with the highest precedence appear at the top of the table. Those with the lowest priority appears at the bottom. तो सबसे ज्यादा हाई प्रेसिडेंस होती है हमारे पास पैरेंथेसिस की, जो कि होता है लेफ्ट टू राइट. देन वी हैव एक्सपोनेंट्स राइट टू लेफ्ट. देन वी हैव यूनरी प्लस यूनरी माइनस राइट टू लेफ्ट. देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्लो डिवीजन मॉड्यूलस left to right. Then we have addition subtraction left to right. Then we have comparison operators left to right. We have not यानी कि logical boolean operator which is again right to left. Then logical boolean operator and left to right or logical boolean operator left to right. Input function, input का मतलब होता है the data entered by the user in the program. So it is used to accept the value of a variable from the user. To input integer and float values, we can use int and float function along with the input function. तो हमने एक प्रोग्राम लिया है जहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं टू नंबर्स को which is provided by the user. जैसे हमने लिया number 1 int, हमने किया provide the first number, then हमने प्रिंट कराया provide the second number, sum is equals to number 1 plus number 2. फिर हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे the sum of two given number is sum. नाउ जब यूजर से ये हम रन कराएंगे प्रोग्राम को तो आएगा प्रोवाइड द फर्स्ट नंबर, यूजर ने डाला 325. फिर आएगा प्रोवाइड द सेकंड नंबर, यूजर ने डाला 275 एंड देन द सम ऑफ टू गिवन नंबर इज 600. सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन नंबर फर्स्ट और सेकंड यूजर से एंटर कराएंगे. इस बार हम सम नहीं करा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, तो हम माइनस कर देंगे एंड डिफरेंस आएगा हमारा लाइक दिस. देन ये हमने यहाँ पे क्या कराया है, एवरेज निकाला है ऑफ सर्टेन मार्क्स. एवरेज निकल जाएगा सिमिलर वे में हम सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कराएंगे यूजर से, एक फॉर्मूला पुट करेंगे फॉर फाइंडिंग द एवरेज एंड देन वी विल गॉट द आउटपुट. टू कैलकुलेट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्यूबॉइड हमने क्या कराया, यहाँ पे हाइट लेंथ हमने यूजर से एंटर कराई, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया L इंटू बी इंटू एच, सरफेस का एरिया लिखा हमने, प्रिंट करा दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज दिस एंड सरफेस एरिया इज this. There is an activity जहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखना है to calculate the sum of two numbers entered by the user. Let's revise the chapter. Python is a high-level interpreted programming language. Python support करता है interactive and script mode. Variables store data values. Python has several data types like integer, string, and float. Print function displays output. Let's do the exercise. First is tick the correct option. Which symbol is used to start a comment in Python? Hash. Which data type would you use to store numeric value without decimals? Integer. How do you create a variable x with the value 3? So x is equals to 3. Which mode allows you to execute Python code line by line? Interactive. Now, which operator is used for exponential in Python? Next is fill in the blanks. The dash function is used to display output. So the function which is used to display output is print. Dash is a high-level programming language, Python. Variable in Python are case sensitive. In Python, hash is used for single line comments. To add value 5 to a variable x, you can use x plus equals to 5. Let's just answer one word. What is the output of print to exponent 3? 8. What data type is Python in Python? String data type. Which symbol is used for comments in Python? Hash. What extension is used by Python files? .py. What operator is used to perform division that discards the remainder? Float division.
Let's do true, false. Python can only run on Windows. False. The equals to operator checks for equality. True. Variable in Python can start with a number. False. False. Python is considered a low-level programming language. False. The Python code print 10-3 with print. False. So students, this was a complete chapter about Python. I hope it is clear to you. Do revise your chapter once again and learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.